Yes, sir. केते नंबर क्वेश्चन रे हम थिले केटा क्वेश्चन सरथिला safeguarding the yes sir सेटा सरी जाइतला सर सेटा आपण कहितले जे इंडिया रे जेमती हेइतला तो सेमती करिया पई सेही कॉन्टेक्स्ट रे so context है but I'll still add few things माने eight type of question पढ़ले what you need to do that's the whole thing I'll just tell in short safeguarding the Odisha heritage is the need of the movement right and I think I do not need to explain now just tell me why do we need to save the heritage what is heritage and why do you need to save all these are parts right the question is safeguarding the Odisha heritage is the need of the movement माने ता ऊपर गोटे थ्रेट अच्छी ताले यार को आसीबो गोटे इंट्रो आसीबो तापरे थ्रेट आसीबो तापरे थ्रेट रु rather the best part is this intro तापरे शॉर्ट रे लिखि दबो इंपोर्टेंस तापरे थ्रेट then तापरे को करियो ना स्टेप्स now tell me what is the significance of a heritage heritage or significance कौन और ताकू सेफगार्ड में कौन पे करियो आ कोइलु बिरया Sir, to continue century old heritage, to make the best use of it, to involve future generation, to pass the age old knowledge and wisdom. तापरे सेटिंग बहुत होला देन अरे किछ नहीं देख Sir, हाँ ना आओ किसी एतिके माइंड आउच इंपोर्टेंस ता लिखिबो होला हमर एंशिएंट हेरिटेज रे हमकु कल्चरल रूट्स दो आज सकाळ क्लास रे बुझौथली गॉन आज द रोहिंग्यास व्हाट इज अ नेशन जा पाखरे नाही से जानिछि कष्टटा कोन राइट एंड हमकु कोन दबो ना कल्चरल आइडेंटिटी एंड प्राइड दो जापान ऊपरे न्यूक्लियर अटैक हला एटम बम पड़ला से पूर्ण तर ठिया गला केमितिया ना कल्चरल प्राइड जो बुझला जेतले पूरा एशिया स्लेवरी रे थिला व्हाइट्स करो जापान वाज द ओनली एशियन कंट्री व्हिच केम आउट ऑफ इट हमें एटा को वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास रे करथिले समथिंग कॉल्ड एज मेजी रिस्टोरेशन आई होप यू नो दिस थिंग्स सो एटा कोन हम रूट्स थिले हमें हमकू ना हमर एथर कोन होने परियो ना करप्शन अरे हवनी ना all those good things which you know ଆମର କଣ ରହିବ ନା ସେନ୍ସ ଅଫ କଣ ରହିବ ବ୍ରଦରହୁଡ ରହିବ ଗୋଟେ ସେନ୍ସ ଅଫ ବିଲଙ୍ଗିଂନେସ୍ ରହିବ that is called as fraternity ଏଛଡା ଥିଲେ କଣ ହବ ନା ଜଷ୍ଟିସ ରହିବ ଆମେ ଆମର आइडेंटिटी ऊपर प्राइड नहीं परथु हमर ग्लोरियस हिस्ट्री को देखिए से अगेन बैक टू द ट्रैक इक्वालिटी जस्टिस fraternity brotherhood all these things can be maintained which you know about the preambles I am simply trying to say you the knowledge which you all have जोटा लेखिकी मोर इंप्रेशन मु बेसी देखि परथि मु से कामटा एठी करिवि एठी मु जतले सिग्निफिकेंस ऑफ हेरिटेज मु लेखुची मु सेठी ओटे इंप्रेशन देखार पोजीशन रे मु रहूची जणो करी ए पार्ट मु टिके स्पेसिफिकली शॉर्टली किंतु ओटे भल रे लेखिवि रथ यात्रा नाउ हैज बिकम अ ग्लोबल phenomenon thanks to ISKCON whatever might be the case now that is our cultural pride जगन्नाथ मंदिर has become our cultural pride सेटा हमर कल्चर कोन तमर अगुरु क्लास रे कराइछ पूरी मंदिर जदी पूरी रु काढी दिया जीवो if in the wildest imagination then Puri is not even a village मंदिर जोगु ए जगाटार एते डेवलपमेंट अछि हमर
टूरिज्म होची गोटे इकोनॉमिक इंपैक्ट रोची यार तेणुक हेरिटेज जगह गुड़ाकर जमी भुवनेश्वर इज द टेम्पल सिटी ये सब टर्म लिखिव तुम आंसर टर्म गुरा किसी लिखाई ना व्हाइट पगोड़ा ब्लैक पगोड़ा कोणार्क पुरी तू जदि तारिणी मंदिर काटी दबु केउझर कि से जगह किसी ना सो द इकोनॉमी मोर और लेस तारिणी मंदिर अराउंड बुलची से बुझला तारा तारिणी हूँ एंड दिस इज कॉल्ड एज टेम्पल एज अ हेरिटेज एंड कल्चर एमती अन्य बहुत गुड़ाए जिनस भी अच्छी से बुद्धिज्म भी आसीपर दस देयर इज अ टूरिज्म इंपैक्ट देयर इज एन इकोनॉमिकल इंपैक्ट कल्चरल आइडेंटिटी एंड प्राइड अच्छी हिस्टोरिकल इंपैक्ट भी एथर अच्छी जेमती लाइक दैट ऑफ जहाँ तू जानिचु यू नो अबाउट द कलिंग वॉर सो यू आर इन अ पोजिशन टू मेंशन द कलिंग वॉर ओवर हियर तू जहाँ जानिचु ताकू टाणी उठारे की आंसर करके लिखिबु कलिंग वॉर अगेन यू नो धम्म घोष एंड द धम्म ऊपर तोर किसी अच्छी नॉलेज एंड ओडिशा कल्चर इज कॉल्ड एज जगन्नाथ कल्चर मोरी आंसर लिखाई जगन्नाथ कल्ट बोली सेटा कल्ट नो cult normally if not always being used in a negative term so आम लिखा जगन्नाथ कल्चर कि जगन्नाथ थॉट प्रोसेस hence there was a rise of Vaishnavism जदि तू इन पोजिशन रहूचु then mix it or refer it to that of the भक्ति movement Vaishnavism जदि से एसु देखे तू एसु जिनस आगु जानिचु all these are our culture तू टे फिक्स सेट ऑफ माइंड रे आंसर लिखुचु that is the whole trouble all the things which you know now the moment you know relax this thing and the moment you write from the various dimensions तू खाली मन खोली की लेख तू कौन जान नथलु कहार आंसर मते देखा गलानी चैतन्य महाप्रभु किबा भक्ति मूवमेंट रो किछि पार्ट एठी आसी पारि थांता गीत गोविंद एठी आसी पारि थांता लिटरेचर आसी पारि थांता ओडिसी डांस आसी पारि थांता बहुत पिला खातिर एटा कहला ना मिसिंग हला बुझौची तार गोटा कौन रोचे ना हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस नाउ दिस इज समथिंग कॉल्ड एज importance of safeguarding the culture rest of the things which you know that is well and fine now listen now tell me what are the threats to the Odisha heritage ro mane threats kon dabo कहलु शोभा heritage working सुभावनी ओके देख पुरी रे थिला एमआर मठ को एस्टैब्लिश करथिले स्वयं रामानुजाचार्य the philosopher who founded विशिष्ट अद्वैतवाद जी रीएस्टैब्लिश कर ले वैष्णविज्म को और द हिंदू थॉट प्रोसेस को हिंदूंकर चारि धाम भितर गोटे धाम हूँ पुरी धाम जगन्नाथ धाम सेठी किए आसथिले रामानुजाचार्य तांकर एस्टैब्लिश मठटा को भांगी देले कि ना प्रीवियस पीजेडी गवर्नमेंट पांड्यन दिस दैट एंड व्हाट एवर यू से एट द एंड ऑफ द डे जो कामटा को कला पहाड़ कर नथला 800 वर्षर मुस्लिम रूल कर नथिला 200 वर्षर क्रिश्चियन रूल कर नथिला से कामटा को आमे कर दलु I hope you are getting so we are not within that ambit of cultural pride and heritage स्वयं गुरु नानक आसले पुरी स्वयं गुरु नानक पुरी आसले सिंहद्वार सामने बन जाते मंगू मठ आम ताकू भांग देलु सो इट इज नॉट ऑलवेज फेयर टू ब्लेम द आउटसाइडर इन्वेडर्स व्हाट वी डिड एटा सब हेची जस्ट फ्यू इयर्स बैक राइट ना कौन आम से कौन बनैबू कॉरिडोर बनैबू कॉरिडोर टाकू हेरिटेज सिटी हेरिटेज भांगी बनाते they did the same thing now the things are looking beautiful agreed but at what cost you have looted out the heritage of the city hence so there is a stress on the in the form of what now beauty making or aesthetic sense or rapid urbanization
or political criteria or that of the vote bank politics. So there is a threat on that of the Odisha heritage. First one बुझेला getting एमआर मठ लिखी हो ना यस एमआर मठ को ସେମାନେ कहले कि हमें शिफ्ट कर दबो तमे मठ को शिफ्ट करियो केमते तेणु के सेटा कोन कर दिया होला ना भांगी दिया होला बुझियोछि फर्स्ट पॉइंट रैपिड urbanization and all those points which you know how कोन everything you know this see तापर आको भाबे तो हमर हेरिटेज कोन कोन अछि गोटे अछि पट्टचित्र पेंटिंग पट्टचित्र पेंटिंग तमाने तो यू तमान को भितरु केते जन को आछि पेंटिंग as it has no more remunerative the youths are not interested in the पट्टचित्र पेंटिंग आउ कोन पिपिली चांदुआ भी हमर को हे जे गलानी ना लोप पाई पे जाउछि ग्रेजुअली आउ कोन संबलपुरी हैंडलूम्स ऑल द थिंग्स यू नो जहा जानि छु खाली भाबिक सारा लेख बुझला पट्टचित्र पेंटिंग तो आगो जानि छु पिपिली चांदुआ तू जानि छु संबलपुरी हैंडलूम्स तू जानि छु स्टोन कार्विंग्स से स्टोन कार्विंग्स रो काम भी ग्रेजुअली कोन होछि धीरे धीरे कमी कमी जाउछि सेथरे गवर्नमेंट रो फंडिंग भी रहुनी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होछि very recently फैलिन आस्तला जगन्नाथ टेंपल को से डैमेज करी जाइछि natural heritage like that of the mangrove forest and coastal ecosystem tribal areas are under threat due to industrialization all these things we know right cyclones of sea floods of sea this that and all now this much point is so these are basically the threats you know the importance of the heritage kahuchi you know much more thing you do not need content you have enormous contents पट्टचित्र तो जानी छु बुझला मठ कथा जब जान नथु ताले मु तुमको एने कहि देली और नाउ दिस इज द कोन ना थ्रेट्स डॉन्ट एने जो पार्ट लिखिबो सेठी आसीबो करंट अफेयर पार्ट ना स्टेप्स टू सेफगार्ड ओडिशन हेरिटेज नाउ व्हाट आर द स्टेप्स टू सेफगार्ड द हेरिटेज कहिदिए प्रथम पॉइंट सब लिखिबा सबु बेले स्टेप्स मु लिखी माने वे फॉरवर्ड दोची किंबा सॉल्यूशन दोची मु सबु बेले लिखिबी गवर्नमेंट को कला फर्स्ट पॉइंट दैट शुड बी द फर्स्ट पॉइंट माने एठी मु स्कीम लिखि परिबी से कोन इंस्टीट्यूशन बनै छी मु तो लिख परिबी आगो गवर्नमेंट को कला क government schemes like Avada scheme, heritage development scheme, तापर श्री जगन्नाथ परिक्रमा प्रकल्प, तापर समलेश्वरी टेम्पल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तापर preservation of diamond triangle in Jatpur district for Buddhist and Jainist, तापर regular demands for GI tax of Odisha heritage based products. एती पांचटा बोल लिखथिल तापरे ओडिशा स्टेट rest of the things in the answer sheet ओडिशा स्टेट आर्कियोलॉजी इंस्टीट्यूशन में कोन बनै ओडिशा स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट एटा इंस्टीट्यूशन along with ASI Archaeological Survey of India must continue to enforce heritage protection हला आउट पॉइंट असला जतो पॉइंट तो लिखलो इट इज एन एडेड पॉइंट मोर और लेस एटा पिला लिखिबेनी एटा होची कोन ना गवर्नमेंट कोन कोन करिछि ता पर हेडिंग गोटे दे हबो वे फॉरवर्ड कोन कोन करि होबा कथा बुझेला जेतले मु कहूची कोन कोन करि होबा कथा वे फॉरवर्ड रे आइडियलिस्टिक आंसर लिखि हबो कोन लिखि ना हेरिटेज लेजिस्लेशन होबा कथा क्रिएटिंग हेरिटेज जोन्स होबा कथा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होबा कथा वे फॉरवर्ड गवर्नमेंट को बेसी टंका दबा कथा these are very common answers for everyone एनजीओ संगे कोलैबोरेशन होबा कथा पीपीपी होबा कथा बुझेला लोकल कम्युनिटीज ट्रूली बुझी परिबे कि तार सेफगार्ड केमथि अवधारण करी विलेज पंचायत ग्राम सभा रो किबा पीआरआईज रो किबा लोकल बॉडीज रो हेल्प नबा कथा getting the best point is this you can write it anywhere education and awareness program में रहया कथा heritage विषय रे it should be a part of the syllabus of education syllabus तो एटा को कोठी लिख दे परियो environment problem हो से social problem हो से heritage problem any problem these points can be added ppp mode कर दवा education रे पूरे दवा awareness campaign करिया
लोकल बॉडीज कर हेल्प नवा बुझेला गवर्नमेंट फंड बढ़ाई दवा. These are very general answers, can always be written in the way forward part. Rest, the schemes which you have said now, that has to be imbibed. But writing answers, do not make it a general answer. मते सेठी कौन दरकार होची संबलपुरी हैंडलूम्स रो ना पट्टचित्र रो ना हला सिल्वर फिलिग्री रो ना बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट रे किछि ना मन पले धौली जैन पळे आसले कौन लिख देबू खंडगिरी. All these things you know, right? किछि बार ना मन पले कोणार्क जगन्नाथ टेम्पल. If all these examples will get imbibed along with the knowledge which you have, now that will create an impact in the answers and you'll clear mains this time. Done. And I hopefully think you can write a better answer now. I need these words in your answer. We're done with this question. Yes, sir. Sir, conclusion में खाली PM's vision of विकास भी विरासत भी है. हाँ, good. Thank you. Eco-friendly tourism and all these things you know, right? I don't need to explain what is eco-friendly tourism. That is sustainable tourism practices. Sustainable term तक मन रखता more or less many of the parts in paper 2 and 3 you can write anywhere. Sustainable. If we come to the next question, I hopefully you are holding the question right. What are the regions? Region for direct that led to the Bhakti movement, that led to rise of Bhakti movement in Odisha and its impact. Bhakti movement upare specifically test one में हमें पूरा detail ले नहीं चु. I do not want to repeat. Now you know what is Bhakti. You know what is Bhakti movement. One of its projection was Bhakti literature, which were done in the first test. So as of now, leave it. Now I don't need to explain those things. Let's directly come to that of the region of the Bhakti movement in Odisha. Exactly more or less the same points. Jaha thila Indian Bhakti movement ro context re eithi भी more or less same point रहिबो. खाली specific ना आसियो. बोधे विषय मु तो कहीं जाने नहीं. तू सबू जानछु. जेमती की कौन ना आसियो. Okay, we'll deal. Now tell me what are the regions for the rise of Bhakti movement in Odisha, or tell the regions for the rise of Bhakti movement as a whole. Bhakti movement कौन पे rise कला? Caste hierarchy, Caste hierarchy, okay. social issues like untouchability, Okay. priestly class domination, Okay. See, all these points are not three different points. All the three you said, this is one sub point. गोटे point रो तीनटा सब point एटा. सेटा होची socio-religious condition. With all the three points you said, that is a part of the socio-religious condition, right? बुझेला. आउ गोटे point तमे एटी मिस करछ. Corruption of ritualistic practices. Ritualism. Ritual माने okay. Ritual माने तम कथो पानीटा एमती पकेबू, हातटा एमती धोइबू, एमती बसिबू, ए काम परे से काम हवा कथा, एठी नडिया थवा कथा, से पोड़ा कथा. Various rituals are there. So that has led to, so that is a true essence of corruption in the temples. Hence, because now the life has become very complicated. Because of that, you need to come out of that complicacy. To come out of that complicacy, a soft way is needed without any rituals. Me, my God, full stop. ता भितरे मंत्र तंत्र यंत्र किछि नै. मु आउ मोर प्रभु खाली भक्ति. Hence, that will become a movement. Rest of the things already been done. Clear ala? এটা হচ্ছে গোটে পয়েন্ট সোশিও রিলিজিয়াস পয়েন্ট. আমার কোশ্চেন হচ্ছে রাইজ অফ ভক্তি মুভমেন্ট ইন ওড়িশা রিজনস. তু এনে যোটা কইলু সেটা হচ্ছে সোশিও রিলিজিয়াস পয়েন্ট. ହେଲା ওড়িশা রে স্পেসিফিক্যালি কাই রাইজ কলা. দেখ ভক্তির ট্র্যাডিশন আম পাখরে আগুরু থিলা. The things are not new to us. In the sense জগন্নাথ কালচার আগুরু এটি থিলা. जगन्नाथ कल्चर रे पूरी जगन्नाथ मंदिर रे आज भी आई टेल यू ताकर गोटे मुख्य जे
ଅଛନ୍ତି ସେବାୟତ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଦଇତାସ ଦଇତାପତି ଦଇତାପତି ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହଁ ମୋରଲେ ସବର ବୁଝିଲା ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଅପର କାଷ୍ଟ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସେବା କରୁଛି ମୋରଲେସ୍ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣିକାଲ କ୍ଲାସ୍ ତେଣୁକରି ଜଗନ୍ନାଥ କଲଚରରେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶା କଲଚରଟା ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ କଲଚରରେ ଯାଉଛି ଆମର କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମଟା ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନୁହଁ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଏଠି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏତେ କାଷ୍ଟ ସୁଟ୍ ଆମର ଏଠି ନାହିଁ so irrespective of their caste everyone and anyone can eat from the same plate ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇପାରିବେ ସେଟା ପ୍ରସାଦର ପ୍ରସାଦ ସେଟା ହେଉଛି ମହାପ୍ରସାଦ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ଆସିକି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ବି ସମର୍ପଣ ହେଇପାରୁଛି ମହାବୀରଙ୍କ ପାଖରେ ବି ସମର୍ପଣ ହେଇପାରୁଛି ସେଥିରେ ଅଇଁଠା ନାହିଁ ଗୋଟେ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମର ରିଜିଡିଟି ଏଠି ନଥିଲା ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେନ୍ସ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏତେ ନଥିଲା first point and the bhakti system was already in the odisha culture ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତି ଆଗରୁ ଆମର ଥିଲା ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରେଇବ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଏଠି ହବ and that will equally get accepted ଆମେ ଆଗରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଥିଲୁ ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି the Shaktas ଯିଏ ଠାକୁରାଣୀ କି ପୂଜା କରନ୍ତି the Shaktas considered Lord Jagannath as Shakti the Shaivites considered Lord Jagannath as Shiva Ganapatyas considered Lord Jagannath as Ganesha and the Vaishnavites considered Lord Jagannath as Vishnu hence jaha bhi eta kahide everything is leading towards bhakti so there was an already influence of bhakti within the state under these circumstances Teunukari, the influence of the earlier religious tradition will also lead to rise of bhakti movement or acceptance of bhakti movement within the state এইଠି ତୁ ଆସିକି ଲେଖିପାରିବୁ କାହା କାହା ନା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଇଗଲା ଆମର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ହେଇଗଲେ and all the ଆମର କାହା କଥା କହୁଛି ମୁଁ ପଞ୍ଚସଖା ଓଲ୍ଡ ପଞ୍ଚସଖା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ତମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବ ନା ଲେଖିଦେଇ ପାରିବ and all those names you know very well ଏଇଟା ହବ ତୋର ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟଟା କହିଥିଲୁ ସୋସିଓ ରିଲିଜିୟସ୍ ପଏଣ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଅର୍ଲିୟର ରିଲିଜିୟସ୍ ଟ୍ରାଡିସନ୍ସ ଆଗରୁ ଆମର ବେସ୍ ପଡ଼ିକି ଥିଲା ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା ବୁଝିଲା ଥର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟା କ୍ଲାସରେ ଆଗରୁ କରାହେଇଛି ପଲିଟିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଥର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଦେଲି ଏଇଟା ପଲିଟିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ସେତେବେଳେ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଇସଲାମିକ ମୁସଲିମ ଇନଭେଜନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଇଛି and they were outsiders, exclusivist thought process people. Hence, there was enormous atrocities happening on that of the public. Hence, when you are in a massive suffering, you have no other option than to look towards God. Hence, there was a rise of bhakti. First point. Second point, there was onslaught of Islamic convergence. Empty of lekhibuni. It is just to explain you. There was an onslaught of Islamic convergence, and hence to safeguard themselves, Indians or the bhakts or the saints want to get rid of the ritualism. So hence to find that spiritual solace and personal devotion as a form of resistance, spiritual solace and personal devotion as a form of resistance to the outside invaders, the bhakti movement got its root spreaded within Odisha. Are you getting the third point? This is political factor. Or you want me to explain again? So the third point, I don't Like understand. Islamic invasion hela, tale Islamic invasion hela, se gote mass murdering, butchering, atrocity habo. Under these circumstances, you have no other way than having faith on God. Hence, you will become more God biased or more pro God. ଯେତେବେଳେ ତମ ଘର ଭିତରେ କିଏ ଗୋଟେ ପଶିବ ତମ ପ୍ରଥମ କଥା ତୁ କହିବୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ମତେ କ'ଣ କର ରକ୍ଷା କର ବୁଝିଲା ତା ବାଦରେ ଏଟା ହେଉଛି one of the sub point. Second, I hope you are getting what I am saying. ବୁଝିଲା Yes, first sir. sub point. ତାପରେ there was brutal conversion to other religious thought process which was very new to India. ଆଗରୁ ଏମିତି କେବେ ହେଇନଥିଲା. Hence,
for the spiritual solace and and personal devotion as a form of resistance. Now we cannot take up the swords, right? India रे ठीक ଅଛି ancient days ଯେତେବେଳେ war ହଉଥିଲା ancient days ରେ war ଏମିତି ହଉଥିଲା ଏପଟ କିଙ୍ଗଡମ ଆସିବ ସେପଟ କିଙ୍ଗଡମ ଆସିବ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ ଆଗରୁ ଥିବ ଫିଲ୍ଡ ଡିସାଇଡେଡ ଥିବ ସେମାନେ ଫିଲ୍ଡରେ ଯାଇକି ଲଢିବେ एग्रीकल्चर वाला एग्रीकल्चर करिवो ट्रेड कॉमर्स वाला ट्रेड कॉमर्स करिवो जी जहाँ काम करिवे सेमान जे कि आम आदमी को मरा हो नथिला बुझियोची सो दिस वाज द टाइप ऑफ वॉर यूज्ड टू बी इन इंडिया धर्म युद्ध होता सेतबेले वारियर क्लास लड़िबे सेठी मरामरी हेबे संध्या हे गला परे आ लड़े हबनी सूर्य उदय है कि शंख बाजिला पर जाय कि लड़ाई हबो 1 to 1 लड़ाई हबो इफ यू हैव 10,000 फोर्सेस आगो लोकटार अछि 10टा फोर्स तेलु 10,000 रु 10टा लोक आसी लड़िबे तापर 10टा लोक आसीबे एम्ति हे कि लड़ाई हबो धर्म युद्ध होतले सेतबेले इन्वेजन्स पर सेमती किछि रहिलानी atrocities mass killings hela धार्मिक कॉन्सेप्ट इंडिया रे किछि आउ रहिलानी इस्लामिक कन्वर्जन बेसी हला तू सेठी लिखिबु रिलीजियस कन्वर्जन बेसी हला atrocity को हला ना बेसी हला as a form of resistance spiritual solace and personal devotion has become a form of resistance to that of the conversion from to other foreign religious thought process बुझेला ना पुन थर कहबी सुबा Yes, sir. बुझेला बुझी न आइले मु पुन थरे कहबी मते रिजल्ट दरकार एते जिंस लेखियार नाही मो क्लास टाइम रे खाली बुझेई दउची खाली लेखि आसीबु पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थिला अनफ्रीक्वेंट इन्वेजन हला आउटसाइडर्स मुस्लिम रूलर्स जदि लेखिलु किबा लेखिबु टर्को पर्शियन रूलर्स मानकर thus in reaction spiritual solace and personal devotion has become a form of resistance एटा होची गोटे सब पॉइंट आ गोटे कोन ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत होतला राइज ऑफ द गारू कास्ट सिस्टम टा बेसिकली गार थिबो सब बोले जेमति तम माने गोटे सिटी रहउचो को बस रे जाउचो यू आर नॉट आस्किंग द कास्ट ऑफ द नियर बाय गाय होटल रे खाउचो तू जाकी पचारनु कि तार रोसई की करछि इंडस्ट्री रे काम करछो यू डू नॉट आस्क किंतु गा रे समस्त जान थांदी एटा होची को गा ब्राह्मण घर गा कर्ण घर गा या घर गा ता घर गा तेणु कर सेटा आगुरु जणा थाए द मोर यू मूव आउट ऑफ द रूरल प्लेसेस द कास्ट सिस्टम एंड द सेग्रीगेशन डिक्रीजेस कीपिंग दिस इन नॉलेज ट्रेड एंड कॉमर्स हेची तेणु करी कोस्टल एरिया रे एटलीस्ट सी रे ट्रेड एंड कॉमर्स हेची flourishing trade and commerce hechi money is a very powerful concept irrespective of your caste religion this that and all if you got money you are above everything hence because of that trade and commerce flourished in coastal Odisha urbanization brought people from various sections of the society to one place बुझा बहुत लोकों को आने की से गोटे जगह रख दे पाला भक्ति मूवमेंट भी किसी सेग्रीगेशन कथा कहूनी दी जनकर एम जोड़ा का सेम लगुची भक्ति तथे स्पिरिचुअल सोलेज दोची तेणु करी एमाने भी भक्ति आड़ को गले जेतक पैसा वाला लोक मोर और लेस दे आर डिवोटीज अंबानी इज अ डिवोटी अदानी इज अ डिवोटी एबे सब तो जाइथिले कोन करिया पे कि कुंभ करिया को सब जिंस स्टार्ट हो जदी तोर पेट फुल थिबो ट्रेड एंड कॉमर्स हला गोटे जगह रे बहुत कैटेगरी लोक आसिले तांपर टंका अछि तांको स्पिरिचुअल सोलेज दरकार भक्ति मूवमेंट स्पिरिचुअल सोलेज दउतला रिचुअल्स नथिला से माने भक्ति मूवमेंट आडो गले हेंस इट इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ राइज ऑफ भक्ति मूवमेंट इन ओडिशा भक्ति मूवमेंट बस खाली कोस्टल ओडिसा रे थिला ना 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 कहूँ स्पेसिफिकली एटा गोटे पॉइंट हे परिबो कोस्टल ओडिशा पाई
we are seeing various points, right? One of the point is this also. Western Odisha रे see Bhakti movement has taken maximum success. So this is one of the point for the Eastern Odisha also. Coastal zone टंका पत्र थिला बोली बुझला. Yes, sir. Influence of the saints and reformers. I do not need to explain more about Chaitanya Mahaprabhu. पूरा क्लास रे एक समय बुझला. बलराम दास, जयदेव, अच्युतानंद दास, श्री चैतन्य एमानकर निजर गोटे पर्सनल ऑरा थिला. Because of that aura, Bhakti movement has become a success in Odisha. बुझला. In fact, हम जानले rest of the things are been done. Now tell me, because of these reasons, now tell me the impact of the Bhakti movement on Odisha. Exactly the same thing which you know. Bhakti movement जो क्लास है था मोरा तमे से ही लिखिबो किंतु तो ओडिसा से टर्म ता लिखि देनी मु टिके स्पेसिफिकली एग्जांपल मा टर्म किस्ता नेकी ता भीतर मु पुरेइबी दैट विल बिकम माय ओडिसा आंसर देन ना कोन ना रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन तुम कौन कही पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन डिवोटी एंड द गॉड बुझला. पर्सनल रिलेशनशिप एटा कौन ना एठी तू कौन लिखिबू ना ए जिंसटा आगुरु जगन्नाथ टेंपल थिला सरला आ कौन लिखिबू ना स्प्रेड ऑफ संकीर्तन और हरि नाम पूजन by that of Chaitanya Mahaprabhu. Bhajan has become the culture. Social reforms hela कास्ट बाउंड्री कास्ट जेंडर सोशल स्टेटस समस्ते कौन है ना बाहर को पढ़ेले एरा सब ओडिया राइटिंग से भी देखा गला. भक्ति रो भजन सब लिखा गला जोटा कि या विरुद्ध रे भी लिखा है होथिला. उ सिमिलर जिंसटा को यूजिंग माय कॉमन सेंस आई एम राइटिंग सम एक्स्ट्रा लाइंस दैट्स इट टू मेक दैट एन ओडिशा आंसर. कल्चरल रेनेजेंस हला. रेनेजेंस माने रिबर्थ हला सेटा ओडिया लिटरेचर रे देखा हला. किछि कोडू न मन पड़ले यू वन नेम यू नो वेरी वेल गीत गोविंद किए लिखथिले ना जयदेव